Hi everyone, I'm Rachna Daryani. I'm a counselor, clinical hypnotherapist, a soft skills trainer, and a group counselor. It's been over 3.5 years. I've been trying to help you all for free, and I want to mention in the beginning of the video itself, if ever you feel lonely, you don't have anyone to talk to, something is bothering you, please connect with me. Today we're going to discuss a term so widely used and quite popular. आई एम लिटिल डाउटफुल कि किसी ने सुना नहीं होगा, बट लेट्स से कि आपने नहीं सुना है या सुना है, हम कुछ इसके बारे में इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, इसको समझेंगे कि ये टर्म है क्या। ये टर्म है घोस्टिंग। घोस्टिंग क्या होता है, क्यों करते हैं, हम कैसे फील करते हैं, या तो हम किसी को करते हैं घोस्ट या कोई हमें घोस्ट करता है। Let's first discuss the term ghosting. What does it mean? So, ghosting means when we abruptly, without any information, without explaining, we disappear from someone's life or someone else does it to us. यानी कि जब आप एक दूसरे को टेक्स्ट मैसेजेस भेजना बंद कर देते हो या वहाँ से हर सोशल मीडिया से ब्लॉक करना स्टार्ट कर देते हो, or you avoid any confrontation, any kind of conversation about why are you doing it and what is the reason. Although many a times हमें at the back of our mind reason पता होता है, but फिर भी जब हमें ghost करता है कोई, obviously हमें अच्छा भी नहीं लगता, और जब हम किसी को करते हैं not always हमें मज़ा आ रहा है इसलिए हम किसी को ब्लॉक करते हैं. The term ghosting comes from the word ghost obviously. तो ghost doesn't mean कि आप भूत बन गए हो, बट घोस्ट दिखाई नहीं देते ना, डिसअपियर हो जाते हैं. तो ऑल्दो वी डोंट थिंक दे एग्जिस्ट, बट चलो ठीक है, दैट्स अनदर टॉपिक. बट दिस इज़ वेयर इट केम फ्रॉम कि ऑल ऑफ अ सडन कोई दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, इज़ लाइक कंप्लीट साइलेंस फ्रॉम द अदर एंड. एंड ऐसा हो सकता है आप किसी को डेट कर रहे हो, आपने उनको घोस्ट कर लिया. कोई आपका अच्छा दोस्त था काफ़ी टाइम तक, उसने आपको घोस्ट कर लिया. तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं एंड रीजंस होते हैं इसके पीछे. तो हम इस टर्म को डाइसेक्ट करेंगे, इसको समझेंगे कि हम क्या करना चाहिए अगर से हमें लोग घोस्ट करते हैं. और अगर से आप उनमें से हो जो बार बार लोगों को घोस्ट करते हैं, आप भी शायद अपने बारे में कुछ समझ पाओ, और who knows, maybe you will not ghost someone next time, although there are certain times that you really need to do it, and I'll discuss that also. लेट्स डिस्कस कि लोग घोस्ट क्यों करते हैं, राइट? कोई लोग ऐसे करते हैं कि अचानक उनको इंटरेस्ट नहीं रहता अपने इस फ्रेंडशिप में या इस रिलेशनशिप में, तो दे आर लाइक ओके लेट्स मूव ऑन. कोई ऐसा करता है कि अचानक आपको कोई नया मिल जाता है, आप ये इंसान को बताने के बजाय आप कंप्लीटली डिसअपियर हो जाते हो, उसको बताते नहीं हो कि आप जा रहे हो. और या तो ऐसे हो सकता है कि सामने वाला, आप बहुत इंटरेस्ट रख रहे हो सामने वाले में, और उस सामने वाले को तुम में इंटरेस्ट ही नहीं है, तुमको सारा टाइम वेट कराते हैं, रिप्लाई नहीं करते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है आप कितने वो सीरियस हैं आपके साथ, जबकि आप उनके साथ काफ़ी हद तक यू क्वाइट कमिटेड टू द रिलेशनशिप और द फ्रेंडशिप. सो ये तो सरफेस लेवल बात हुई ना. जनरली लोग जब घोस्ट करते हैं ना, देर इज़ अ डीपर सेंस एंड डीपर मीनिंग बिहाइंड ऑल दिस. सो लेट्स लुक एट द डीपर रीजन्स वाई समवन माइट घोस्ट यू और यू घोस्ट समवन. मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ फियर ऑफ कन्फ्रंटेशन, फियर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, फियर ऑफ कमिटमेंट. क्योंकि क्या होता है, मैं केसेस के साथ समझाती हूँ. लेट्स अज्यूम कि कोई है आपके सामने, ठीक है, वो आप में बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हो, और आपको रियलाइज हो रहा दिस पर्सन डजंट सीम टू बी द पर्सन आई वांट टू बी इन, बट हाउ डू आई ब्रेक हिज और हर हार्ट? सो व्हाट इज ईजियर टू रन अवे फ्रॉम द सीन. लेट्स से conflict, to avoid conflict. Most of us are very uncomfortable fighting, expressing, telling what we think, because we're like, अरे यार मैं ये बोल दूँगी या ये मैं बोल दूँगा तो फिर चढ़ जाएंगे मुझ पे या वो गुस्सा हो जाएंगे, एंड तुम्हें स्ट्रेस लगा होता है कि ओ माय गॉड, इस इंसान को मुझे बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए. इट्स गोइंग टू क्रिएट सो मच ड्रामा, एंड आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू हैंडल इट, आई डोंट नो हाउ दिस पर्सन इज गोइंग टू हैंडल इट. सो
What's better than running away from the scene yet again? Then the other is fear of, let's say, being judged for the person you are, because ऐसा हो सकता है कि आप जब उनको बोलोगे कि hey listen, I don't think I am cut out for this friendship, or I think I don't want to be in a relationship but I want to be just your friend or something, then people will say अरे तुमने मुझे यूज़ किया, तुमने तो ये बोला था, तुमने तो ऐसे बड़े बड़े शब्द बोले थे कि यू आर सो इनटू मी एंड आई एम सो इम्पॉर्टेंट टू यू, एंड for the hell, what are you doing? You're such a horrible human being that you don't think about my feelings, you only think about yourself. So you're afraid of this conflict, this judgmental mindset that someone might have. And चलो ये सब ठीक है, पर कुछ लोग ये सब हटाते हैं. कोई लोग बिल्कुल सेंसिटिव नहीं होते, बिल्कुल नहीं सोचते कि सामने वाले को कितनी तकलीफ होगी जब वो चले जाएंगे. उन लोगों को लगता है यार मुझे क्या लेना देना, वो जो सोच रही है, दे आर सम स्ट्रेंजर टू मी, आई डोंट ओwe them anything, I don't owe them any explanation, any justification. I don't give a damn. The ones who are like absolutely careless with people's feelings and their hearts. So these kind of people also exist. So ऐसा नहीं करके सिर्फ fear of all this. There are some people who just are quite mean. So yeah, those are the few reasons why people ghost. I was discussing the reasons why people ghost, right? Now let's look at it a little bit deeper than I explained earlier, like few sentences let's understand where this comes from. Let's say fear of confrontation. Now, confrontations are not everybody's cup of tea, right? Not everybody is cut out for a debate. Not everybody speaks for themselves. And it could also be कि तुम्हारे childhood experiences में आपने देखा है लर्नड बिहेवियर होता है किसी का, बहुत सहमे होते हैं, या आपको किसी ने बहुत बुली किया होता है, या आपको कोई पास्ट ट्रॉमा हो जहाँ पे आपने कुछ बोला हो और आपको या तो किसी ने बहुत सुनाया हो या आपको किसी ने मारा हो. एंड इवन जनरली मोस्ट ऑफ अस आर नॉट लाइक तलवार निकाल के लड़ने लग गए, क्योंकि वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट तो किक इन होती है जब हम वी स्टार्ट थिंकिंग टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम that distress that is being caused in our life if we speak up, if we rebel, if we confront. So let's say अगर से आपको किसी को confront करना है, कौन से feelings आते हैं? अगर से किसी को आपको कुछ बोलना हो, आपका हार्ट रेट हाई हो जाता है, आपको स्ट्रेस होता है, अनईज होता है, यू फील दिस एंशियस फीलिंग कि oh God, do I really have to do this? Okay, what am I going to say? What if I say this, then that person will say that. So this fear of confrontation, it no matter how good you are at speaking your mind, but when we like somebody, when we actually spend some time with someone, we're not really ready to tell them how we are feeling, because we also want to guard their heart and we are guarding our hearts, right? So दोनों तरफा से जब ये सोच आ जाती है, हम खुद में ही अंदर ही हमारे कॉन्फ्लिक्ट चलता है. बाहर तो दूर की बात है, पहले तो यहीं पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि क्या बोले, कैसे, अरे उसको तकलीफ हो रही है, अरे मुझे तकलीफ हो रही है, हाउ आर वी गोइंग टू गो अबाउट इट. सो दिस ऑल्सो कॉजेज द फियर ऑफ कन्फ्रंटेशन, फियर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट arises, and then we feel the need to ghost. The other reason why we ghost someone is when our communication skills are not on point. अब what does that mean? क्योंकि बात करना एक अपनी जगह है, पर अपने आप को एक्सप्रेस करना, अपनी बाउंड्रीज सेट करना, किसी को ना बोलना, एंड नेविगेटिंग दीज रिलेशनशिप डायनामिक्स effectively takes a lot of skill. And if you're young, of course, it's going to be difficult because you've not had so many experiences, and nor do our schools and colleges teach us how to communicate, how to be more assertive and not aggressive or passive aggressive. So when someone struggles with communication skills, unke itne great nahi hote, and they are not very sure how they're going to express, like I was explaining कि कुछ लोग हम में से जो ऑफकोर्स जो इंट्रोवर्ट होते हैं तो वो तो ज़्यादा वैसे ही नहीं बोलते हैं लोगों से, बट
इंट्रोवर्ट और शाय डिफरेंट बात होती है. शाय लोग तो हार्डली एवर कुछ बोल पाते हैं. Even like if an ambivert or even an extrovert, not necessarily just because you're an extrovert or an ambivert that you're going to be good at confrontations. It's a different skill set that you need to express, to be able to hold on to those flood of emotions. And कोई तुम पे चिल्ला रहा है या तुम चिल्ला रहे हो और हद से बाहर तुम लोगों का कॉन्फ्लिक्ट चला गया है, उसको हैंडल करने के लिए हम लाइफ में कितने एक्सपीरियंसेस होते हैं, बट नॉट नेसेसरी ऑल आर रिलेटेड टू दीज काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, राइट? सो देन व्हाट डज वन ह्यूमन बीइंग डू कि चल यार इतना सब झेलने के बजाय हम डिसअपियर हो जाते हैं. अब ये जो कम्युनिकेशन इश्यूज हैं, how are they rooted? Like, where are they rooted? Let's rather use that term. They are rooted in our upbringing and right the childhood. Like I said, school college में तो सिखा नहीं रहे. घर पे भी आप देखो, जैसे आपका अगर से environment है जहाँ बच्चों को वो freedom होती है कि you are open to express yourself, you are open to express your emotions, then maybe you will flourish at such kind of let me not use the word conflict, but let's say a discussion or even where you sit down and express yourself. So अगर से आपको बचपन से आपने कुछ इमोशंस बताए हैं या आप गुस्सा हुए हो या आपने कुछ एक्सप्लेन किया है अपने फैमिली में या सोसाइटी में या स्कूल में, और अगर से बार बार आपको लेट्स से नेगेटिविटी का सामना करना पड़े, अगर से आपको व्हाट इज़ द वर्ड आई एम लुकिंग फॉर, रिडिक्यूल किया जाए कि द हेल आर यू टॉकिंग अबाउट, और तुमको डिसमिस कर दे यार नॉनसेंस, utter nonsense what you're thinking, or even sometimes you get punished for what you have to say and what you're standing up for, right? So what happens in this case that आपको एक fear आ जाता है to communicate with someone जो तुम्हारे सामने है, क्योंकि you don't know how they're going to take it. So do you know that communication and the fear of confrontation is actually एक दूसरे में मिक्स्ड है, इंटरट्वाइंड है. कैसे कि सपोज कोई कन्फ्रंटेशन करना चाहता है और वो उसको डर लगता है कन्फ्रंटेशन करने से, तो अगर से वो बार बार नहीं कर पाते तो क्या होता है, अवॉइडेंस बिहेवियर जो होती है, देन व्हाट डज इट रिजल्ट इन? पुअर कम्युनिकेशन. नाउ लेट्स से कि आप कम्युनिकेशन में ग्रेट नहीं हो और आपको हाइटेंड फियर ऑफ कन्फ्रंटेशन भी है, तो वो तो मैटर इतना बढ़ जाएगा, राइट? क्योंकि आपको डर भी लग रहा है और आप वैसे भी ज़्यादा नहीं बोलते, तो एंड यू कांट सेट बाउंड्रीज, यू कांट एक्सप्रेस योर इमोशंस. सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट बैलेंस टू अचीव व्हेन वी आर ट्राइंग टू confront someone, right? Because we are afraid, yet we want to speak our minds, yet we don't know how to do that. So in this case, a person ghosts. Another reason that people ghost is lack of emotional maturity. Jab you lack awareness emotionally, you don't understand your emotions, samne wale ka emotions, you don't know how to regulate your feelings and your thoughts and your emotions. तो ये काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्या होता है जब आप इमोशनली बैलेंस नहीं हो, आप स्ट्रगल करते हो ना टू नेविगेट ऑल दीज कॉम्प्लेक्स इमोशन जो मैं आपको पहले समझा रही थी, एंड कैसे इसको हेल्दी और रिस्पेक्टफुल मैनर से कैसे अपने आप को यू पुट फॉरवर्ड. सो यू स्ट्रगल टू प्रोसेस, टू अंडरस्टैंड योर ओन इमोशंस एंड टू कम्युनिकेट. इट्स सच अ बिग डील, राइट? लेट्स अज्यूम कि तुम थोड़ा बहुत समझ भी गए और तुम एक्सप्रेस करना चाहते हो, लाइक आई वाज सेइंग कि टू नेविगेट थ्रू दीज डिसएग्रीमेंट्स and let's say differences and this conflict you're having, you need to have that kind of maturity. You have to be able to have the bandwidth to communicate yourself much better than, क्योंकि हमारे माइंड में जो होता है इतना कॉम्प्लेक्स, इतनी सारी चीज़ें चलती होती हैं, आप क्या बोलोगे क्या नहीं बोलोगे, all this matters. And if you don't understand your own self, why you're doing it, should you be doing it, oh my god, what am I doing, you're going to carry the guilt, or you're going to be not being burdened by this kind of relationship dynamics. There's a lot which goes on, right? So then you think some people who are not really mature enough to be very honest, I don't think it has to do with age also, because I've seen even adults ghosting people. So
मेच्योरिटी ज़रूरी नहीं करके एज के साथ आती है, बट इट्स ओके, समटाइम्स वी जस्ट नॉट कट आउट फॉर completely understanding ourselves. कभी कभी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है और हम अपने आप को समझ नहीं पाते. Earlier, I had discussed very briefly that not necessary that one has fear of confrontation, fear of conflict, fear of commitment, or let's say lacking communication skills. It's also possible that that person is not sensitive enough, that they lack empathy. तो इसका मतलब क्या होता है कि when people have difficulty forming good friendships, strong connections, generally they are a little less sensitive towards the feelings of others. Ki they don't care the impact their action or their words have in, let's say, a friendship or any kind of relationship. So what happens is low empathy मतलब जो लोग self centered होते हैं, self absorbed होते हैं, selfish होते हैं, जो they prioritize their self before anybody else. It's okay to think about yourself. I'm not saying that you should not. बट ये जो लोग होते हैं बड़े सेल्फिश किस्म के होते हैं और दे नेवर मेजर द इम्पैक्ट दैट विल हैपन ऑन द पर्सन्स इमोशंस आफ्टर दे लीव. एंड कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा केयरलेस कैरलेस होते हैं लाइफ में कि दे लाइक आई डोंट गिव अ यू नो व्हाट फिश और व्हाटएवर यू ऑल से. सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस अ पर्सन कैन गोस्ट यू और you could be that person. Because of this new age, digital age, and the convenience of technology, sense of formality भी नहीं रही है. लोग इतने insensitive हो गए, उनको लगता है इस gadget के पीछे एक इंसान नहीं है. तो I would tell you to reconsider that, be a little bit more sensitive. In the beginning, I had mentioned fear of commitment. वो होता क्या है? Can anyone tell me? आई गेस बोल तो सकते हो पर अभी रिकॉर्डिंग चल रही है तो नहीं बोल सकते. चलो मैं ही बात कर लेती हूँ. सो व्हाट इज़ फियर ऑफ कमिटमेंट? व्हेन वी आर इन अ फ्रेंडशिप और अ रिलेशनशिप एंड वी आर अफ्रेड टू बी वल्नरेबल, वी आर अफ्रेड टू शो आवर ट्रू सेल्फ, वी आर अफ्रेड ऑफ ओपनिंग अप आवर हार्ट्स एंड आवर लाइव्स टू अदर्स. सो जब किसी को ये ओवरवेलमिंग फीलिंग आती है ऑफ द prospect or the chance of being intimate with someone and all of a sudden बोलते हैं oops, you mean मुझे ये सब करना पड़ेगा, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा. सो लोगों को जिनको कमिटमेंट इश्यूज होती हैं, क्यों होती है? मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं. जैसे एक इंसान को बहुत आदत है इंडिपेंडेंट रहने की. आजकल तो बहुत ज़्यादा है जो इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस होते हैं, उनको अपने लाइफ में किचकिच नहीं चाहिए. कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, तुमको तुम्हारा क्या हुआ था, तुम क्या किधर जा रहे हो, किधर आ रहे हो. सो दे आर लाइक वेरी वेरी सुपर इंडिपेंडेंट. देन इट कुड ऑल्सो स्टेम फ्रॉम समवन्स नेगेटिव पास्ट एक्सपीरियंसेस. शायद उनके लाइफ में हार्ट ब्रेक्स हुआ हो, डिसअपॉइंटमेंट्स हुआ हो, एंड उनको किसी ने चीट किया हो, किसी ने उनको अबैंडन किया हो, लाइक जैसे किसी ने उनको गोस्ट किया या उनको छोड़ के चले गए, या चाइल्डहुड कोई ट्रॉमा हो. सो ऐसे सम ऑफ दीज पीपल हैव कमिटमेंट इश्यूज. आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज the rule, okay? Please understand when I'm talking, understand the broader aspects of this rather than saying oh अच्छा वो इंसान है ना तो नहीं. हमारे में इतने different reasons से हम किसी को ghost करते हैं. Not necessary it's always about commitment, or it's not necessary that you're low on empathy. Sometimes in anger also you can ghost someone, right? तुम like इतने थक गए हो from the irritation that somebody is causing in your life, and you have done so much and they do not reciprocate, they do not understand where you're coming from. You give time, you give effort, you do so much for them, and they keep disrespecting you, and you keep giving them chances, and one day you just you snap like okay, I'm done, I need to move on. So ऐसा भी होता है. So please don't एक पॉइंट सुन के ऐसा किसी के बारे में assume नहीं करते. Try to understand what I'm trying to say to you all, so that you can do self-introspection. Instead of looking at others and judging them, let's try to figure out what kind of people we are, why we do what we do. It's such a beautiful process, right, to understand, and we also evolve during this process of understanding ourselves.
There's one more reason which I forgot to mention earlier, that एक इंसान जिसका बहुत stubborn mindset है. लेट्स से आप एक रिलेशनशिप में जाते हो या एक फ्रेंडशिप में जाते हैं, कुछ लोग ना इनिशियली उनको समझ में आ जाता है, मे बी उनका इंट्यूशन है, या तो वो बहुत ज़्यादा स्टबन है कि इट्स नॉट वर्किंग आउट, इट्स नॉट ऑर्गेनिकली वर्किंग आउट, एंड यू नो इट्स नॉट डेस्टिन्ड टू वर्क आउट, और इट्स गोइंग टू, उनको एक assumption हो जाती है that it is destined to fail, and so hell with it, let me move on. बहुत हद तक जब ऐसा होता है, एक तो उनका माइंडसेट ऐसा होता है, सेकंड लाइक मे बी उन्होंने इतना एक्सपीरियंस किया है कि उनको समझ में आ जाता है इन द लेट्स से द फर्स्ट 5 or whatever conversations, or the amount of times they text or something, they get a vibe. Some people are, they do get a vibe, but I have, in my lifetime, what I have seen, not necessarily that is always true. Sometimes क्या होता है कि आपको एक इंसान की वाइब इनिशियली अच्छी लगती नहीं है, ठीक है, पर उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद आपको रियलाइज होता है, ओ यू टू क्विक टू जज एंड यू जंपिंग टू कंक्लूजन्स. सो ये जो स्टबर्न और यू नो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है कि मुझे नहीं लगता दिस इज मेंट टू वर्क, forget it, you know, 1 or 2 qualities are not matching, let's move on. So on the other hand, the people who don't have such an obstinate mindset, the other hand is a growth mindset कि नहीं, एक रिश्ते को, एक दोस्ती को आपको एफर्ट डालना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है. इट्स continuous, right? It evolves over time. There is no, like, it's not stagnant, it is not static, it's not predetermined. Yeah, maybe if you're like very let's say religious or spiritual, then you say कि हाँ okay, this person आया ना, मुझे वो फीलिंग आ रही, वो अलग है. वो साइड पे रखते हुए आपको पता है जो भी आपको काइंड ऑफ फीलिंग्स भी आती हैं, किसी भी चीज़ में अगर से आप मेहनत ना करो, आप कम्युनिकेट ना करो, आप यू नो इंसान को वक्त ना दो, क्योंकि ऐसा हो सकता है जिससे आप बात कर रहे हो उसको टाइम लग रहा है टू लेट लूज, टू बी फ्री, टू कम्युनिकेट, बिकॉज इनिशियली समटाइम्स अ पर्सन इज like should I say this, should I not say this, what is this, what if I say this, what if I behave like this. So sometimes people are on their best behavior, sometimes people are extremely quiet when they initially get into a friendship and all, because they're not very sure. So ऐसा हो सकता है कि you lose a good friend or a good relationship just because you're so quick, you're so stubborn, कि तुम्हारा mindset ऐसा है कि ये तो ये, नहीं तो और कुछ नहीं. सो ऐसे लोग भी ज़्यादा सोचते नहीं हैं, उनका माइंडसेट ऐसा है, तो वो गोस्ट करके चले जाते हैं. अब लेट्स टॉक अबाउट व्हेन वी गोस्ट फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन, टू preserve ourselves, self-preservation, survival, to avoid this conflict. Let's talk a little bit deeper about it. क्योंकि जब हमें लगता है we are going to face criticism, negative reaction, या कोई हम पे चिल्लाएगा, और हमारे को लग रहा है हमारा सेंस ऑफ सिक्योरिटी, हम वी आर फीलिंग वेरी अनसेफ, आर इमोशनल वेलबींग एज वेल एज आर लेट्स से फिजिकल वेलबींग इज अंडर थ्रेट, and we want to avoid this potential so-called disaster about to happen. So what we do, we try to get away from it. How many people have problems with, let's say, personal safety, or their boundaries being encroached, and they feel like, you know, abuse हो रहा है, या emotional, physical या psychological, किसी भी तरह का जब abuse होता है एक इंसान का, तो वो इंसान को कोई चॉइस नहीं रहता है, क्योंकि ऑलमोस्ट वो एक विक्टिम हो जाता है, राइट, ये सब सिचुएशन में. तो आई एम जस्ट सेइंग दैट इट कुड बी मल्टीपल रीजंस, लाइक आई सेड. और ये जो केस होता है जहाँ पे आपको लगता है यू आर अंडर सम काइंड ऑफ थ्रेट, and you're afraid for your personal safety, and you think that this method of self-protection, of ghosting, is what you need to do, it's completely okay. So there are times that we don't need to explain ourselves. We don't need to justify why we are doing what we are doing. If you think that you're happier, you're more sane, and it's not creating havoc in your daily life or your mental health, it's okay to just go without explaining to anyone.
Let's talk about attachment styles. Yeah, तुम लोग में से काफ़ी लोग जानते हैं इनके बारे में, but I try not to tag ourselves too much with an definition. Rachna Daryani equals to anxious, Rachna Daryani equals to avoidant or fearful avoidant or insecure secure, जो भी different types हैं. तो मुझे लगता है हर रिश्ते में हम जैसे जैसे इवॉल्व होते हैं, यस हमारा बचपन वी आर अ टोटल सम ऑफ अ पास्ट आई गेस, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जो हमारे होते हैं वो हमें शेप और फॉर्म करते हैं. तो ऐसा हो सकता है कि जस्ट बिकॉज वी आर अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल जहाँ पे वी let's say value independence and sufficiency, and we don't want to get too close to someone, so we might struggle with emotional intimacy. There are a lot of people who are avoidant attachment style जिनकी होती है, like initially वो ज़्यादा दिखाते फिर अचानक वो they move away, so they are avoiding such things and they want to avoid emotional closeness, right? So these kind of people also ghost. देन जो fearful avoidant होते हैं जिनको डर भी लगता है और avoidant भी है कि oh my god, if I get too close and I'll feel hurt, I'll it is going to hurt me so much, I'll never be able to overcome it, and that potential let's say pain that that person is imagining in their mind. So when एक इंसान is afraid of getting hurt, is afraid of the potential pain, and they keep imagining that this is not going to work, and they keep thinking कि okay, I need to get away from the situation, it is getting too much for me to bear. Now जो anxious attachment styles जो होते हैं, जिनको intimacy चाहिए, जिनको सारा time reassurance चाहिए, और मुझे तो लगता है करके सारा टाइम तो किसको नहीं चाहिए होता, पर कुछ लोगों को चाहिए होता है, वो भी अनहेल्दी होता है, उस पर भी काम करो. बट आई एम सेइंग जो एंशियस होते हैं उनके साथ जब ये गोस्टिंग वाली बात होती है उनको बहुत तकलीफ होती है. एंशियस अटैचमेंट स्टाइल वाले जो लोग होते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि उनको इमोशनल क्लोजनेस, वैलिडेशन, अटेंशन ये सब चाहिए होता है, राइट? तो जब उनको कोई गोस्ट करके चले जाता है तो उनके वो एंग्जाइटीज ट्रिगर होते हैं. वो लोग अचानक ऐसे सोचते हैं, ओ माई गॉड, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम द वन टू बी ब्लेम्ड, एंड दे लुक एट इट लाइक दे बीन अबैंडन्ड एंड उनका कोई नहीं है, एंड दे फील दिस, although I dislike this word rejection, because we are not things, we are not kachra, so nobody should, no human being can reject other people, but because people use this word rejection just so frivolously, I'm just saying that they feel this way ki oh, I'm not good enough for this person, and unka distress becomes so heightened that they then carry that trauma even fast forward to their next relationship. Then they're all the time anxious, oh my god, अब I'm in a new relationship, this person is also going to leave me, this person will also ghost me. So there's a lot we can learn about ourselves, and we don't, I don't believe like there is another attachment style called disorganized attachment style. उनके इसमें confusion चलता रहता है, mixed of styles होते हैं. But let's not put these tags. मैं हमेशा कहती हूँ कि जो introverts हैं, जो ऐसे attachment styles हैं, या जो भी आप लोगों का personality issues हैं, मुझे लगता है जब हम उस अपने आप को ऐसे बॉक्स में डालते हैं ना, और ज़िंदगी भर फिर हम उस अपने आप को सिर्फ इसी टर्म से रिकग्नाइज भी करते हैं और डिफाइन भी करते हैं, मुझे लगता है वी आर सो मच मोर देन आर ऑल दीज attachment styles or the personality traits. If you're an introvert, I don't think that, yes, it's okay to be an introvert, but if you feel like, you want to go out and you want to meet people, network, you can push yourself. We can evolve into and work on our so-called limitations if we feel ki theek hai, this anxious attachment style is not good for me, and I'm clinging to a person and I'm coming out across so desperate. I feel that we all should be working on ourselves, and we should not be begging people to be in our lives. And even if someone ghosts us, should be able to handle ourselves. Yes, it might hurt. Yes, it's a painful process to experience, but we can move forward, understanding ourselves, trying to work on ourselves, and to do better next time, rather than using it as to play victim कि अरे मेरे साथ लास्ट टाइम भी हुआ था, नेक्स्ट टाइम भी मैं विक्टिम ही होऊंगा या होंगी, एंड देयर इज नथिंग एल्स एनीबडी कैन डू फॉर मी. आई एम लाइक completely worthless. Every single time someone will abandon me, I am. So this is what we need to work on ourselves. Ki learn to be self-sufficient also, and not completely dependent on another human being.
And if they ghost, what to do about it, we'll discuss little later. But I hope you get the points that I'm basically explaining to you all. हम इतनी देर बात कर रहे थे अबाउट द रीजन समबडी गोस्ट. तुम्हें पता है और एक रीज़न क्या है कि नॉट नेसेसरी कि वो इंसान को एम्पैथी नहीं है. ऐसा हो सकता है कि वो इंसान कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं कि अगर से मैं इसको ओवर्टली बोल दूँ, डायरेक्टली बोल दूँ कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, दिस पर्सन विल हर्ट सो मच, राइट? तो व्हेन यू केयर अबाउट समवन, यू थिंक कि इट्स बेस्ट टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ feeling which they carry that they are not good enough. So out of perhaps sympathy, you say नहीं यार, इस इंसान को हर्ट नहीं करते, इसको बताते नहीं हम कैसे फील कर रहे हैं. पर प्रॉब्लम इसमें क्या है पता है कि वो इंसान हमेशा सोचता रह जाएगा, आप घोस्ट करके चले जाओगे. आई मीन आफ्टर सम टाइम साइलेंस ऑल्सो स्पीक्स 1,000 वर्ड्स, राइट, और मच मोर. बट हैविंग सेड दैट, कोई अगर से आपके लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, किसी से आप काफ़ी देर बात कर रहे हैं, सी एरा गहरा नथु गहरा होता तो यू डोंट थिंक मच व्हेन दे डोंट टेक्स्ट यू और समथिंग. ऑब्वियसली यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो आप किसी से टच में रहते हो और तुम्हें लग रहा है करके ओ लुक्स लाइक दिस पर्सन इज इंटरेस्टेड इन यू एंड यू आर नॉट इनटू देम एंड you don't want to hurt them, so you decide it's better to just go away. But having said that, either which way they are going to hurt ना. ऐसा ज़रूरी नहीं करके आप नहीं बता के जाओगे पर कि उनको हर्ट नहीं होगा. शायद आपके जाने से उनको और भी ऐसा एक वैक्यूम फील होगा कि उप्स, what did just happen? Everything was going in their mind, it is actually going very well. It's your mind which is different from theirs, and which is okay. There's nothing wrong. You have to be, you don't out of खैरात या out of pity किसी के साथ रहना अच्छी बात नहीं है, राइट? तो सच बोलना इम्पॉर्टेंट है. और अगर से आपको लगता है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपने उनको बहुत बार बोला है कि यार वी आर नॉट कट आउट फॉर ईच अदर, एंड दैट पर्सन कीप्स फोर्सिंग कि नहीं ना, ट्राई करना और एक बार बात करते हैं, चलना, लेट्स स्टे फ्रेंड्स एंड लेट्स सी मे बी इट विल ग्रो इनटू समथिंग. बट समवेयर इनसाइड यू आर लाइक आई थिंक आई एम डन. And then yes, it becomes important for your mental health and for your peace of mind to not unnecessarily string them along. अगर से आप लोगों ने मेरी वीडियो ऑफ ब्रेड क्रमिंग देखी है, ज़रूर देखना अगर से नहीं देखी है. आई थिंक वो भी आप लोग काफ़ी करते हो और आपके साथ भी होता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट, एंड it's also possible na, that you can be little nicer when you're saying even something like this. You can say it in a better way when you're letting somebody down. There are ways that you can communicate without being too harsh. Now we've spoken enough about why people ghost. Now let's discuss what happens when you ghost someone. It's possible that you've been ghosted or you are ghosting someone. So let's try to understand कि होता क्या है जब आप किसी को ghost करते हो या आप किसी को ऐसे ही बिना बताए उनके लाइफ से चले जाते हो. So the first thing that happens is the person is left confused. No matter how many times we perhaps tell somebody, especially in a deeper relationship, in a good bond, like they kind of get an idea. Let's say थोड़ी बहुत fights हो रही हैं और you know that there are ups and downs, and all of a sudden you just flee from the scene. So what happens? It's sometimes even more painful than a breakup. Breakup में एटलीस्ट वो इंसान को पता होता है कि क्या हो रहा है, हम छोड़ के जा रहे हैं, दोनों तरफ से ख़त्म होता है या एक तरफ से ख़त्म होता है. पर जब आप किसी को गोस्ट करते हो तो वो इंसान के सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचती है. वो इंसान डिस्पोजेबल फील करते हैं, जैसे अपने डिस्पोजेबल प्लेट्स, कटलरी ऐसे नहीं हम फेंक देते हैं. They feel like that and they feel very unimportant. They don't feel valued. They feel like, oh my God, this person just is so cruel, and it's a very horrible thing that they're getting no closure. Most of us are looking for closure, or as overrated closures are. And I always say, stop looking for closures, because there are many signs you get along the way. But let's assume that certain people really want closure. When you ghost them, they don't get that chance. They don't understand. You leave them
कंफ्यूज्ड कि तुम्हारे लिए रुके कि चले जाएं कि तुम्हें कांटेक्ट करें. और कुछ लोग जब घोस्ट होते हैं तो वो इतने डेस्परेट हो जाते हैं टू कनेक्ट विद दैट पर्सन. उसके फ्रेंड्स को कॉल लगाना, उनके फैमिली को कॉल लगाना, इस सोशल मीडिया उस सोशल मीडिया, नया सिम, नया अकाउंट बनाना, ईमेल बनाना उस इंसान को, बिकॉज दे आर सो डेस्परेट, they are so lost without you that they are hurting so much that they lose all capability of thinking what's right and wrong. In that moment they are just like, बस ये इंसान कहीं sometimes when you ghost, एक तो वो प्रॉब्लम होती है कि वो इंसान मर गया क्या, उसका फ़ोन गुम हो गया क्या, अचानक वो इंसान तुम्हारे लाइफ से चला गया, तो यू आर लाइक कॉन्स्टेंट. एंड इफ यू आर one of those who overthinks, or one of those who are not really independent and was dependent on this relationship, that person ko, the setback that they have, that's a lot to deal with at that moment. So they are so confused, you leave them perplexed, and that would be one of the good reasons not to ghost anyone without informing them, even if it is just one line and block that, hey listen, I don't want to hurt you, but I think it's not working out. So please forgive me. I need to leave and I don't want to hurt you more. I don't want to get into a confrontation. It makes me uncomfortable. Whatever, say something, you were so kind. It was lovely. But ज़्यादा उनको, when you, it's very condescending or it is very flattery, ज़्यादा मत यूज़ करो, because then that person says कि कितना फेक बन रहा है, अगर से इतनी में अच्छी थी या इतना में अच्छा था तो जा क्यों रहे, राइट. सो ओवर द टॉप भी नहीं करना है कि वो इंसान थोड़ा ऐसा लगे करके तुम अपने आप को या तो बहुत ग्रेट दिखा रहे हो या तो वो इंसान को बहुत ग्रेट दिखा रहे हो, तो दोनों नहीं करना है कि टू मेक योर सेल्फ लाइक सुपीरियर. आई हैव डिसाइडेड दैट आई डोंट वांट टू बी इन दिस रिलेशनशिप, एंड ऑन द अदर हैंड यू टेल दिस पर्सन आई एम नॉट गुड इनफ फॉर यू, इट्स नॉट यू, इट्स मी. ऐसा बहुत लोग बोलते हैं, बट जनरली इट्स बोथ ऑफ यू, इट्स नॉट जस्ट वन पर्सन. ताली दोनों हाथ से बजती, कंपैटिबिलिटी नहीं होती होगी इसलिए. सो बी केयरफुल. Don't hurt anyone if it is not required. Like I said, black and white cases की बात नहीं हो रही है, हम regular friendships, regular relationships की बात कर रहे हैं. अगर से of course you're feeling threatened and you're feeling unsafe with this person, then you don't need to justify, you don't need to give a closure, you just move on. So I was discussing the impact that it has on someone's mental health when you just leave them without giving them any closure. It could be, if it was something simple, let's say you went to a club or you went to some coffee shop, आपने नंबर एक्सचेंज किया, किसी को आपने हेलो बोला और इंसान ने आपको घोस्ट कर दिया, रिप्लाई नहीं किया. Doesn't matter, right? Because just one evening you spent, or you just barely got to know each other. Or let's say many of you are on dating apps and आप लोग कुछ messages couple of days exchange करते हो और वो इंसान चला जाता है. Most likely ऐसे कि उनको लगा कि आप compatible नहीं हो. Maybe they don't have, I've explained why people do it, so that it could be many of the reasons that they didn't tell you before leaving. Of course, long-term friendships की जब बात करें और जब आप एक मीटिंग सेटअप करते हो, क्लाइंट प्रोफेशनल रिलेशनशिप में तो घोस्टिंग होनी ही नहीं चाहिए. मुझे लगता है दैट इज़, आई मीन इट्स सो सैड ना, व्हाट आई जस्ट सेड, इट्स जस्ट स्ट्रक मी दैट प्रोफेशनल रिलेशनशिप में आप फिर भी सोचोगे अपने क्लाइंट, अगर से तुम्हारा पेड क्लाइंट है या तुमको पोटेंशियल क्लाइंट है या आप उनके साथ काम कर रहे हो और भी काम करने का आपका अपॉर्चुनिटी है. कितनी अजीब बात है ना कि उनको हम घोस्ट नहीं करेंगे, पर ऐसे लोगों को हम करते हैं जो हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट रहते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि इफ़ यू बीन ऑन अ डेटिंग ऐप और इफ़ यू मेट समवन इन अ कॉफ़ी शॉप और अ बार एंड इट्स अ वेरी trivial, superficial contact that you've had with them, that's okay. I mean, I understand that you're not feeling like kya time waste kare, it's just not feeling the vibe. But if it's a deeper friendship, it's some relationship, you've been with someone for few months and all of a sudden to end the communication, it really affects the person's self-worth. So be careful. They feel very lost, they don't feel valuable, and they will carry this baggage into the next relationship and they will question their self-worth because of this. They'll think that they are not good enough. Let's say in the relationship they were very not so nice, okay,
मे बी यू कैन गिव सम फीडबैक कि हे मुझसे ये हैंडल नहीं हुआ, बट नॉट नेसेसरी मैंने हैंडल कर सका या कर सके कि समवन एल्स कैन नॉट हैंडल. सो ऐसा हो सकता है, आप थोड़ा एक्सप्लेन करके जा सकते हो, बट रिमेंबर दीज एक्सप्लेनेशंस एंड लॉन्ग ड्रॉन कॉन्वर्सेशंस कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स. सो even if you just write barely like few lines like I explained earlier, that's good enough. At least they have something to digest when you leave, like okay, this person explained to me. They'll be still confused. I'm not saying necessarily that आपने लिखा और उनको समझ गया. नहीं, जब आपको दुख होता है, दर्द होता है, आप इतना जल्दी लॉजिकल नहीं सोच सकते, आपको फिर भी गुस्सा आएगा. We discussed what is ghosting. We discussed why people ghost. We discussed what happens when you are ghosted. Now let's discuss what happens to the person who ghosts someone. Okay, अब ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान जो घोस्ट करता है उसको जस्ट बिकॉज कन्फ्रंटेशन और कॉन्फ्लिक्ट से प्रॉब्लम है तो वो बिल्कुल अपना प्रोसेस नहीं कर सकता फीलिंग्स. ऐसा हो सकता है उन्हें गिल्ट, शेम, उन्हें ये रियलाइजेशन हो कि damn, I'm feeling so bad that I hurt this person I cared about. I wonder if this person is doing fine after I've left. So ये जो गिल्ट और शेम हो सकता है. ऐसा भी हो सकता है कि एक सेंस ऑफ रिलीफ आ सकता है कि चलो यार ये किट ख़त्म हो गया, नाउ न्यू चैप्टर इन माई लाइफ, एंड thank God I didn't have to confront, I didn't have to have a conversation, a discussion, any kind of uncomfortable situation I didn't have to deal with. और जो लोग जिनके नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स होते हैं वो तो उनका अलग ही लेवल का प्राइड होता है, उनका एक परसीव सेंस ऑफ क्या कंट्रोल होता है, पावर होता है कि मैंने घोस्ट कर लिया. सो दे फील लाइक ओके, अब्रप्टली किसी के साथ आपने कनेक्शन तोड़ दिया तो वो जो उनको पावर मिलती है वो उनको उसका हाई मिलता है. आई एम नॉट सेइंग सब लोग के पास सब लोग ऐसे होते हैं. जनरली हम लोग काफ़ी सेंसिबल और सेंसिटिव लोग होते हैं. तो मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द टाइम जितना मैंने लाइफ देखी है, हम गिल्ट और शेम ज़रूर फील करते हैं. हमको बुरा लगता है कि हम किसी को हर्ट किया, पर कभी कभी हमारे पास कोई चॉइस नहीं होता तो हम ऐसा करते हैं. और क्या होता है कि कुछ टाइम बाद, 6 महीना, 1 साल, कभी फ्यू वीक्स, ऑफकोर्स देयर इज़ नो सेट पैटर्न टू दिस. तो there are some people who just can't deal with that. They can't deal with what a stupid decision they made to walk out on this person, or they feel like they regret their decision, or they feel this guilt and shame. So either they go back and apologize, or they just send a note and then block them again. So if you feel like apologizing and you think that okay, this person deserves my apology and I genuinely fucked up and I was not in my right senses, just ghosting this person, I could have at least just said something, a line or so, and then left this person, considering this person was important to me. So आप ऐसा भी कर सकते हैं. Now I'm not saying the people who ghost are not good people. Not all of them are bad people or narcissistic, okay? Because we have good and bad traits. Maybe they don't have the trait to be thoughtful, or they don't have the trait to communicate. So it doesn't necessarily make them bad, but all of y'all who don't have these skills, please work on yourself. And it doesn't take much, right? 30 seconds to 1 minute it takes to maybe write a sentence to this person, how important they were and why you're doing what you're doing. And without being hurtful, without blaming them, without blaming yourself too much, and say, ki, okay, I think it was not working out and I really respect you. I didn't want to leave you without telling you this because I didn't want you to wonder and be confused why I have gone away. So please take it as an apology. Now let's discuss how do you cope अगर से आपको किसी ने घोस्ट किया है. इनिशियली जो हमारा इनिशियल रिएक्शन ऑफ कन्फ्यूजन होता है उसके बाद क्या आता है? ब्लेम. वी स्टार्ट ब्लेमिंग आवरसेल्व्स, वी फील रिग्रेट, वी फील एम्बैरेस्ड, हमें वी फील शेम, वी फील कि मेरे इज्जत का कचरा कर दिया इस इंसान ने. इतना करने के बाद आई रिस्क सो मच फॉर दिस पर्सन एंड दिस रिलेशनशिप, दिस फ्रेंडशिप, एंड इट बैकफायर्ड, राइट? सो काफ़ी पर्सनल फील होता है ना हमारे को अगर से कोई ऐसा छोड़ के चला जाता है. बट डोंट टेक इट सो पर्सनली. इट्स मोर अबाउट देम दैन यू. They were not equipped to say goodbye to you. They were not equipped
if you watch the first half of this video that I have made, the reasons behind people ghost. Maybe if you watch it, you can perhaps understand this person a bit more, because when you were in touch with them, it's possible that they displayed certain traits which are more visible now than that time when you are in connection with this person. Because कभी कभी when we're too close to something, हमको उस इंसान में ये चीज़ें नज़र नहीं आती है, तो शायद ऐसा हो सकता है करके आपको रीज़न अभी इमीडिएटली ना मिले, पर आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि यू आर नॉट द रीज़न दैट इट हैपेंड. It's the person who has ghosted you has to take the responsibility. I'm not saying the entirety of the relationship that didn't work out is only that person's responsibility. I'm talking about only the element of ghosting. That is not about you. It's more about them. So please do understand this. Then the second thing is, क्या होता है कि जब हम इस ब्लेम और इस एम्बैरसमेंट और शेम में जब फंस जाते हैं कि हमें किसी ने घोस्ट किया, तो क्या होता है, हमारा नेचुरल रिएक्शन होता है, वी पुट आवर गार्ड्स अप, वी पुट अ वॉल around us. Why? Because we've just been hurt, right? And not even just been hurt. Many people over time also not being able to let go of this pain and this hurt, because they think कि नहीं करते यार डेट, नहीं बनाते यार दोस्त, इस दोस्त ने मेरा ट्रस्ट तोड़ा था, इस फ्रेंडशिप में किसी ने मुझे छोड़ दिया था, या जो भी हुआ. तो वी स्टार्ट, वो इसको बोलते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, जैसे ऑल और नथिंग. या तो जब थे तो बहुत कुछ अच्छा चल रहा था, और फिर ज़ीरो करना कि नो, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स नो फ्रेंडशिप्स, नो डेटिंग, नथिंग. तो ये टाइम, लेट्स से थोड़ा टाइम ले लो. Okay, I'm not telling you to rush into another friendship, another relationship. Process your feelings. Understand what you're experiencing. Try to watch the videos, do some journaling, and get your feelings, regroup, and be kind to yourself. Take a break from all this. And क्या होता है करके लाइफ में हर चीज़ का रीज़न नहीं मिल सकता आपको. तो शायद ऐसा हो कि आपने पूरी वीडियो देख ली और आपको फिर भी समझ में नहीं आया इंसान ने ऐसा क्यों किया. सम थिंग्स वी कैन नॉट एक्सप्लेन, सम थिंग्स वी विल नेवर फाइंड आंसर्स फॉर. Only that person, sometimes even that person would not know why they did something like that, right? So instead of doing that, instead of wasting your time blaming yourself and hiding behind these walls and never exposing yourself to hurt, ये ज़िंदगी है. ज़िंदगी में हमेशा हम खुश नहीं रहेंगे. आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस, ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको अपने बारे में सिखाएंगे, ज़िंदगी के बारे में सिखाएंगे. You can be stronger, you can be resilient only if you want to. So make sure that after some time, stop the blame game, talk kindly to yourself, and focus on your life. Try to go out there and experience life again. So if you've been ghosted, I want you to take care of yourself. I know that you're hurting at the moment. पर इसका मतलब नहीं कि आप बिस्तर पकड़ के बस सारा दिन उससे बाहर ना निकलो. इनिशियली आपको ऐसा लगेगा, एक आध दिन ठीक है, उससे ज़्यादा ऐसे लेटे पड़े मत रहो. Make sure you go to your work or school or college. Make sure you talk to your friends, your family, hobbies, activities, homeopathy, Ayurveda. Also, if you feel like taking some supplements to help you ease the pain, there are certain things that you can do. I will also attach the self-worth and overthinking wala module to this video, and if I don't, please remind me. And it's very important कि आप अपना sleep, अपना exercise, meditation, comedies देखना, बाहर जाना, अपने ज़िंदगी को fulfilling बनाना. Because the thing is this, right? This person, अगर से आप थोड़ा उसको deeper सोचोगे, क्या आपको ऐसा इंसान चाहिए जो आपको रिस्पेक्ट नहीं करते, जो रेडिली आपके लाइफ में नहीं रहना चाहते, जो सिंपल बेसिक फंडामेंटल्स को समझ नहीं पा रहे हैं. एक रिश्ते में जब हम होते हैं, एक हेल्दी रिलेशनशिप में क्या होना चाहिए? म्यूचुअल रिस्पेक्ट. इज़ इट रिस्पेक्टफुल जब हमें कोई ऐसा छोड़ के चला जाता है? अगर से इंसान कम्युनिकेट ना करे, इज़न्ट गुड कम्युनिकेशन पार्ट ऑफ अ गुड फ्रेंडशिप, अ गुड रिलेशनशिप? So why is this person so important? Why are we giving them more
more importance than they deserve. And the other element which is important in a good friendship or a relationship is thoughtfulness. This person was not really thoughtful, even though they were trying to protect you, even though they were trying not to hurt you. But I have said that writing one line before you leave somebody's life is respectful. It will hurt them, but you have to compare which pain is more. Yes, you don't like the confrontation, you don't want the conflict. But having said that, don't you think you should just inform and go? And then you can maybe block. And as I said, जब आपको कोई ब्लॉक करता है तकलीफ बहुत होती है. इस पे हम एक अलग टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे. आई जस्ट वांट टू कीप दिस टू गोस्टिंग. एंड लेट्स से कि आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आपको धीरे धीरे कोई गोस्ट कर रहा है. कुछ लोग ऐसे करते हैं, कुछ लोग धीरे धीरे वीन ऑफ करके किसी के लाइफ से चले जाते हैं बिना बताए. तो अगर से आपको ऐसा हो रहा है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो. लुक्स लाइक यू आर नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन मी. डोंट मेक इट लाइक अ बिग फाइट, बिकॉज like I said, if they don't want to be in your life, what are you going to do about it? And the person who is receiving this text, if you can, be kind, be polite, and just tell them in few words that it's not working out without being harsh. And I know we can't completely avoid the confrontation in this way, which you are really trying to run away from. But it's better that you inform the person and go. We were discussing that once you get ghosted, you are really very afraid of going and making new friends or starting dating again. So, what do we do in that case? So, one, introspection is key. What went right and what went wrong in this relationship? What are you ready to be self-aware, to understand ki, okay, this is the reason it must have happened and this is what I need to fix about myself. Not necessarily you have made a mistake, so do not go into the blame game. We are not perfect, so make sure कि ये ना हो कि आप सिर्फ अपने आप को ब्लेम करो. रिलेशनशिप में जब दो लोग मिलते हैं इतनी सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं, कम्युनिकेशन स्टाइल्स मिसमैच हो सकती है, पर्सनैलिटी स्टाइल्स, लव लैंग्वेजेस समझो एक दूसरे की और अपने खुद की भी. तुम्हारी अटैचमेंट स्टाइल क्या है, ये जब तुम्हारा ख़त्म हो जाता है, किसी के साथ ऐसा कुछ होता है, दिस इज़ अ टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट, टू अंडरस्टैंड. एंड आप अपना एक्सपेक्टेशंस भी लोगों के साथ आपके कितनी होती है. मे बी आप उनमें से हो कि आपने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था इस इंसान से और वो इंसान डर के भाग गया, या ऐसे हो सकता है. और थॉटफुल क्वेश्चंस अपने आप को पूछो कि व्हाट डिड आई डू एंड डिड आई पेस द अर्ली पार्ट ऑफ द रिलेशनशिप. मैनी ऑफ यू ऑल क्या करते हो ना, कॉन्स्टेंट लगे रहते हो, कॉल्स, टेक्स्ट, बिल्कुल अपने काम पे, पढ़ाई पे कुछ भी ध्यान नहीं देते हो. तो ये सब प्रॉब्लम्स फिर क्रिएट होती है कि बहुत वो सामने वाला मे बी आपका, उनका और आपका लव लैंग्वेज या आपका कम्युनिकेशन स्टाइल बहुत डिफरेंट है एंड दैट पर्सन इज़ नॉट रियली ओके विथ सच थिंग्स. एंड ऑफकोर्स लॉन्ग डिस्टेंस हो तो ये कॉन्फ्लिक्ट तो हो सकती है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है. मुझे नहीं लगता कि हमेशा इन पर्सन ज़्यादा रिलेशनशिप अच्छा चलता है. लॉन्ग डिस्टेंस भी चल सकते हैं अगर से आप प्रॉपर थॉटफुल क्वेश्चंस एक दूसरे को पूछो और आप अपना वैल्यू सिस्टम समझो, आप अपने एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे को समझाओ, कॉम्प्रोमाइज़ करो, यू वॉक towards each other rather than away from each other. So use this time if you have been ghosted to understand yourself better so that you are more prepared for the next relationship. And always keep telling yourself, it's not the end of the world. If it was not meant to be, it is fine. It's completely okay. You will be fine. We have to work on being more resilient, right? उसका मतलब क्या होता है, गिरना फिर खड़े रहना, गिरना फिर खड़े रहना. हमको लगता है कि हम इन इंसानों के बिना रह नहीं सकते, पर वी हैव टू लर्न दिस एंड दिस इज़ द फैक्ट ऑफ लाइफ. हम अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे. और सेल्फ केयर, सेल्फ कंपैशन इज़ सो इम्पॉर्टेंट. ऐसा कोई इंसान जो आपको बिना बताए चला जाता है, तो हाउ कैन यू लव दैट पर्सन मोर देन यू लव योर सेल्फ? सो रिस्पेक्ट योर सेल्फ. Let them go. It was not meant to be. You don't have to necessarily seek closure. और उनके साइलेंस से समझा करो. कभी कभी हम लोग बहुत डेस्परेट होते हैं उनकी आवाज़ सुनने के लिए. हमको उनको देखना होता है, मिलना होता है, उनको समझना होता है. बट इफ़ दे वर रियली
the right person, the right friend, or the right relationship, they would have these basic qualities which are important: mutual respect, care, consideration, communication, being sensitive to the other person's needs. और जब लोगों को कोई घोस्ट करता है, आप लोग अपना गुस्सा निकालते हो, आप लोग दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग विच आई वॉन्ट टू एक्चुअली एड्रेस. द पीपल हु हैव बीन घोस्टेड, if you have like pics or videos of this person who, when it was going right, you promised them and they trusted you, don't in this time ruin their reputation by forwarding to people or threatening them. That's a very low class act that you will do. It's very नीच हरकत जिसे कहते हैं, किसी को थ्रेटन करना, किसी को ब्लैकमेल करना, जस्ट बिकॉज दे वांट टू लीव यू. कोई घर से आपके लाइफ में नहीं रहना चाहता, उनको रेडिली जाने दो. उनको ये मत सुनाओ कि आपने कितना किया, आप उनके साथ क्या कर लोगे अगर से वो छोड़ के चले जाएंगे, इसको बताऊंगा मैं अपना हाथ काट दूंगा या मैं काट दूंगी या मैं मर जाऊंगा या मर जाऊंगी. ये सब मत करो. इट्स नॉट रियली नाइस टू फोर्स समवन टू बी विथ यू. इतना अपने सेल्फ वर्थ पे काम करो. सेल्फ वर्थ का सेशन पे भी मैंने पूरा वीडियो बनाई है, टिप्स दिए हैं, उसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए. किसी को भीख नहीं मांगते, किसी को फोर्स नहीं करते, किसी को थ्रेटन नहीं करते अपने साथ रहने के लिए. अगर से वो हमारे साथ नहीं रहना चाहते, अपना सर उठा के जियो एंड से ओके, I understand where you're coming from. We are not meant to be, and you don't think we are compatible. And thank you for respecting me and not threatening me. And it's so sad, right? At one time, you really, really liked this person, and just because this person at this moment just said that they don't want you in their life, in a relationship or a friendship, it doesn't mean you're not good enough. It doesn't mean something is wrong with you. It's just that it takes two people to have that compatibility, and maybe they're not feeling it, and they're not bad for it. They're not horrible for it. Yes, we might feel horrible because we had so many expectations, but कभी किसी को ऐसा hurt मत करो. ऐसे लोगों को पूरा वैसे ही आप लोग जब घोस्ट होते हो तो आई नो दैट एंगर निकलता है और वो चिढ़ कि यार इसके लिए इतना किया और इतना मैंने अपना टाइम, अपना एफर्ट्स, अपने इमोशंस डाले और ये इंसान मुझे ऐसे छोड़ के चला, अब मैं इसको दिखाऊंगी या मैं दिखाऊंगा. डोंट डू दैट, डोंट डू दैट. अपना रिस्पेक्ट कायम रखो, अपने रिश्ते का रिस्पेक्ट कायम रखो. आपका अपब्रिंगिंग, इससे पता चलता है कि आप किसी को थ्रेटन करके उनके ऑफिस में मेल्स भेजना या उनके फ्रेंड्स को या उनके फैमिली को या ऑनलाइन कुछ भी एक्सपोज करना, डोंट एवर डू दैट. डोंट. Anyone has any more questions relating to this video, do ask me in case I have missed out.